Quinton de Kock or Henrik Klassen, two frontline South African batters troubled by two frontline Indian pacers. कौन से वो bowlers, कौन से होंगे आज के वो बड़े matchups and क्या होगी आपकी आज की fantasy team? To know that and all more, stay tuned till the end of this preview. So it's KKR versus SRH Eden Gardens Kolkata में मुकाबला and हमारी win prediction towards Sunrisers Hyderabad. Of course, we're expecting a good batting pitch and the slight edge because of the better batting form of their batters. 80% mini GLs and 20% SLs. Why the change in mix in this game? क्योंकि batting teams दोनों तरफ, so you can expect a slightly little set more of volatility. क्योंकि विकेट्स गिरेंगे या नहीं, कौन से बैटर स्कोर करेंगे, दैट बिकम्स स्लाइटली मोर ट्रिकी टू प्रिडिक्ट एंड हेंस स्लाइटली मोर मिनी जीएल्स फॉर यू टू प्ले. स्मॉल लीग्स आप खेल सकते हो ऑन एक्सेल 11 ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. यू विल गेट अ बिग गिव अवे एंड साथ में स्मॉल लीग्स पे लेसर कमीशन, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन इन. ओपिनियन ट्रेडिंग ऑन रियल 11 और माई मास्टर 11 दोनों एप्स के लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. And towards the tactical corner, we go two power pack batting teams, so you can expect a lot of runs. Not too much to speak about unless it's the older Eden Gardens, but as per the new flatter batting track, I think dono sides आप expect कर सकते हो. Lots of big hits. Remember to join us at the rate Fantasy Crick 2 on Twitter and Telegram for the final teams and updates. And do remember to hit the bell icon for all the future updates. Weather report clear for this game. You can expect a full set here. And pitch report की बात की जाए तो of course it's been a flatter track of late. And पहला game पे यहाँ पे there was a decent score setup. I think KKR could have batted better. Let's see how this game goes for them. KKR की बात करें तो similar 11 expected to start again, but lot of concerns. Venkatesh Iyer not in great form. Rinku Singh not in great form. Quinton de Kock से एक ही बड़ी पारी till now. So let's see how this game goes for them. Maybe Anrik Nokia comes in for Spencer Johnson. Again, something to watch out for. SRH की बात की जाए तो Zampa might start, else they might play an extra pacer in that slot. उसके अलावा quite a settled lineup for this game. Now let's get to Team KKR and we'll get straight into the player cards. We start with Quinton de Kock at Kolkata. काफी खराब numbers, सिर्फ 10 की average and versus SRH 36 की average. Remember that he started his career for this team, that is the SRH team. And opening batter, of course, you can expect some wicket keeping backup from him. Let's see how this game goes for him. Sunil Narayan can bat in the top, in the middle versus SRH. Decent record, but off late, not too much to speak about. At Kolkata, now याद रखिए यहाँ पे एक और point to keep in mind कि against the SRH middle order, he can struggle at points. In the last few years, while आप overall record ठीक देख रहे हो, in the last few years, the number of wickets is much lesser. Ajinkya Rahane, decent record, 31 average versus SRH, and at Kolkata, 38 की average. So again, a good showing can be expected from the man. वेंकटेश अय्यर कुछ खास फॉर्म इन्होंने दिखाया नहीं अब तक वर्सेस एसआरएच. 25 की एवरेज एट कोलकाता, 21 की एवरेज. स्लाइट गट फील दैट ही माइट हैव अ गुड गेम हियर एज मिडल ओवर्स में दे रिलाई ऑन देयर लेग स्पिन फ्रॉम बोथ एंड्स. एंड याद रखिए कि वेंकटेश अय्यर डज मैच अप वेल अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ bowling, so maybe today is his day. Ankush Raghuvanshi, stable again, whatever games he's played. 18 की average at Kolkata. In case the team collapses again, he will be the all-important player to stabilize the attack. Rinku Singh, कुछ खास फॉर्म दिखा नहीं है versus SRH. 41 की average and at Kolkata 44 की average. You can try him in a few teams, but currently, क्योंकि he's playing one shot too many, it will be difficult for you to start with him. Andre Russell, लास्ट गेम में bowling के साथ इनका काम जरूर हुआ versus SRH. 12 matches, 19 wickets, so you can be expected to have an important role with the ball again. And at Kolkata, 21 wickets and an average of 36. So again, a good showing for the man. And yaad rakhiye, with his big hits and that pace bowling backup, he will give you decent value. Ramandeep Singh, again, last game में कुछ बड़े hits मार के गए, but was not able to create that everlasting impact. And that will be the problem with the likes of Rinku and Ramandeep, क्योंकि इतना low आते हैं that will always be trouble for you in terms of getting fantasy value. हर्षित राणा, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड वर्सेस एसआरएच. 4 मैचेस, 7 विकेट्स. अब तक फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा है, बट ही हैज अ गुड मैचअप वर्सेस क्लासन, गुड नंबर्स वर्सेस दिस टीम, सो ही माइट हैव his day out here. Varun Chakravarti, decent record versus SRH and good record at Kolkata, 11 matches, 11 wickets versus SRH. And याद रखिए, some left-handers who he can trouble. Henrik Nokia, if he starts 8 matches, 6 wickets versus SRH, in case Spencer Johnson starts, then the man who will be troubled will be this man. Travis Head, 2 matches, 0 runs versus KKR. Of course, the Mitchell Stark the KKR mein. So that will be a big change. But if Spencer Johnson has to get one more game, he will get it because of this man in the opposition. And yaad rakhiye that he will definitely bowl up top against Travis.
Abhishek Sharma, 9 matches, 132 runs, and Civ 16 k average versus KKR, but he's a much improved player in the last 2 years, and his data is of the last 5 years. At Kolkata, 33 k average and 3 wickets. Yaad rakhiye, he might give you some value with the ball too. Ishan Kishan, 7 matches, 191 runs, and 27 k average. And at Kolkata, 5 matches, 158 runs, and 32 k average. Last kuch games se wapas been blowing hot and cold. First game was excellent for him. Let's see how this one goes against Chakravarti and Narayan. He'll definitely have a matchup. Pointed class in versus KKR, 170 की strike rate and 43 की average, and at Kolkata he strikes at 229, a top captaincy choice for this game. Of course, with these numbers, who would not want to back him? And he's a spin mooser. He'll play a key role if they have to play Varun and Narayan positively. Nitish Kumar Reddy कुछ खास फॉर्म में नहीं लगे अब तक. Not too much of contribution. 2 matches, 22 runs versus KKR, and at Kolkata, nothing to speak about. Definitely he'll be in my team, but I think कि जो वो captaincy, vice captaincy potential आप इनसे देखते हैं, you'll not be able to see it at least initially. Abhinav Manohar, 2 matches, 16 runs versus KKR. He'll be your trump pick for this game because at Kolkata, 1 match, 62 runs at a strike rate of 213 when he was playing for GT. He did play that good knock here. Ability to hit those big shots, spin को अच्छा खेलते हैं, and जो death bowling है KKR की is not too much to speak home about. Hence, Abhinav Manohar can have a good day. Pat Cummins, of course, started his career for KKR and 3 matches, 3 wickets versus KKR, 54 runs. He can bat well also at Eden because he knows the conditions decently well. 1 match, 1 wicket versus at Kolkata. हर्षल पटेल की तरफ चलते हैं. 9 matches, 12 wickets versus KKR at Kolkata. 3 matches, 3 wickets, but that was at the Eden of the Old. यहाँ पे याद रखिए, the ball doesn't really stick around much unless that is the case. उसके अलावा I think it'll be tough for you to pick him at least in your base team. फर्स्ट बॉलिंग में ऑफ कोर्स आप कंसिडर कर सकते हो, बट सेकंड बॉलिंग विल बी वेरी टफ. Rahul Chahar, 10 matches, 15 wickets versus KKR, and that's why he's in the slides here because possible that he can start 3 matches, 4 wickets at Kolkata. Then we move to Zishan Ansari. Of course, not played against this team or at Kolkata, but looked very good against the Delhi Capitals. 3 wickets लेके आ रहे हैं, and he'll bring that X factor क्योंकि ज़्यादा देखा नहीं है opposition batters ने इन्हें. Mohammad Shami, 9 matches, 15 wickets versus KKR and at Kolkata, 3 matches, 5 wickets. Of course, a decent record, has decent matchups against this team, and of course, can be pegged to do well, especially क्योंकि ये इनका home ground है, he plays for Bengal. Simarjeet Singh, not played against this team or at this venue, will be a 50-50 choice based on the toss. Adam Zampa, unlikely for me to pick him at least for now, क्योंकि ज़्यादातर जिस तरीके की बैटिंग ट्रैक्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, it will be difficult for you to pick a leg spin bowler. Remember to join Excel 11 पे investment leaderboard and points leaderboard चल रहा है. Some big prizes for you to win. So join all your leagues there and also save commission and support the FCP family. अब चलते हैं आज की fantasy. So now we move towards the fantasy team for this game, and हम start करेंगे from the wicket keeping section. Moinud Klassen, Quinton de Kock, Ishan Kishan, तीनों ठीक ठाक फॉर्म में, blown hot and cold, but of course with the new point system आप देख रहे हैं 3 matches, 2-3 matches में ही बहुत सारे points तीनों के पास. Batting section से Travis Head, दो एक मैचअप है जिसको हम डिस्कस करेंगे. अजिंक्य रहाणे विल बी इन द साइड फॉर नाउ क्योंकि टॉप 3 में बैटिंग करें. वेंकटेश अय्यर आई थिंक विल बी द पंट पिक फॉर दिस गेम क्योंकि आई थिंक जो जिस तरीके से कंडीशन समझते हैं एंड जिस तरीके की स्पिन बॉलिंग को अच्छे से खेलते हैं, आई थिंक ही कैन हैव अ गुड वन. सुनील नारायण, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी एंड ऑन्ड्रे रसेल होंगे मेरे ऑलराउंडर सेक्शन से चारों पिक्स. नीतीश रेड्डी स्लाइटली 50-50 क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं एंड विद द बैट अब तक कुछ खास लगे नहीं है. बॉलिंग सेक्शन से फॉर नाउ आई एम गोइंग विद पैट कमिंस एज द ओनली चॉइस. वरुण चक्रवर्ती को हमने लास्ट गेम में भी ड्रॉप किया था because I was expecting an easy chase, and that's what it was for the Mumbai Indians. अब अगर KKR पहले bowling करती है, then of course it'll be tough for you to drop him. But if he's bowling second and we are expecting good batting conditions, maybe I will take the chance on him again. Pat Cummins आपको bat के साथ भी value देते हैं, and that works out to be his X factor. Mohammad Shami, if he's bowling first, I will go for him. अब चलते हैं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइसेस की तरफ. आई थिंक फॉर नाउ इफ ऑन्ड्रे रसेल इज बॉलिंग फर्स्ट, स्टिल इज अ गुड वाइस कैप्टेंसी चॉइस. कैप्टेंसी और नॉट आई डोंट नो. कैप्टेंसी चॉइस मेरे लिए ट्रम्प पिक इस गेम में होंगे ऑन्ड्रे क्लासन. आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं इन दिस गेम with the kind of record that he has versus this team and at this venue. I think you cannot rule him out, and with the bat you will expect some important knocks. I am not saying कि 11 players आपके 10 players ड्रीम टीम में रहेंगे with the bat, but all I'm trying to say is कि जिस तरीके की आपकी रेशियो है, अगर एक बॉलर 1-2 विकेट जाके ले भी लेता है, इट इज़ नॉट गोना डिस्ट्रॉय योर टीम. बट इफ एनी ऑफ दीज़ बैटर्स को आप छोड़ देते हो एंड कोई जाके चल जाता है, इट विल टोटली डिस्ट्रॉय योर टीम इवन इफ दे स्कोर मोर देन 30-35 रन. सो दैट इज़ अ बिग रिस्क. अब चलते हैं
टुवर्ड्स योर जीएल टीम्स जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, सम बिग ड्रॉप्स दे वर सॉल्व्ड, विराट कोहली। सो लेट्स सी आज अगर हमको जीएल सिनेरियोस के हिसाब से उन बड़े बैटर्स को ड्रॉप करना है, आप किसको ड्रॉप कर सकते हो? स्पेंसर जॉनसन अगर मैं पिक कर रहा हूँ, इन दैट केस ट्रेविस हेड विल बी वन डेफिनेट रिस्क दैट आई विल टेक आउट ऑफ माय टीम। अभिषेक शर्मा फिर भी रहेंगे, एज़ आपको बॉल के साथ वैल्यू दे रहे हैं। ही इज़ लुक डिसेंट बट थोड़ा-सा खराब लग रहा है, लास्ट गेम में भी रन आउट रहा है। उसके अलावा कौन से होंगे आपके वो पिक्स? हर्षित राणा इफ ही इज़ बॉलिंग फर्स्ट विल बी अनदर की चॉइस। किशान को फिर भी रखूँगा मैं साइड में, क्लासन को रखूँगा, नीतीश रेड्डी एंड ट्रेविस हेड, दीज़ विल बी माय 2 की रिस्क एंड देन वी विल पैक अप द टॉप ऑर्डर ऑफ केकेआर। एंड याद रखिए रघुवंशी तभी ऊपर आते हैं जब विकेट्स फॉल अर्ली, इन केस विकेट्स डोंट फॉल अर्ली यू विल सी वेंकटेश अय्यर कमिंग टॉप द ऑर्डर। उसके अलावा बैटिंग यू विल स्टिल गो विथ पैट कमिंस क्योंकि आपको बैट के साथ वो वैल्यू दे के जाएँगे एंड मोहम्मद शमी विल बी अनदर इंटरेस्टिंग पिक इफ ही इज़ बॉलिंग फर्स्ट बट in case Varun is bowling first, then that will be that pick. तो अभी के लिए दिस इज वन रियल सिनेरियो जहां पे अगर हमें लग रहा है कि ट्रेविस हेड एंड नीतीश रेड्डी गेट आउट अर्ली एंड देन केकेआर कम एंड have a good chase. Another GL scenario that we can go with, expecting if you're expecting Mohammad Shami to perform at this venue, उस केस में मोहम्मद शमी will be one pick, Pat Cummins will be another choice. फिर यहाँ पे आप चले जाएंगे विथ योर एसआरएच टॉप ऑर्डर बिकॉज टू रिस्की टू लीव and you'll go with Andre Russell because your bottom order is expected to contribute in case of a KKR collapse. Narayan को फिर भी आप रखोगे because he'll give you value in both departments and फिर आप जाएंगे यहाँ पे with Ankush Raghuvanshi who's looked very very good whenever wickets have fallen early for KKR. So he will be a stable choice and Rinku Singh जिन पे मैं लास्ट कुछ गेम से बैंक कर रहा हूँ बट कुछ खास नहीं आ पा रहा बट बिकॉज ऑफ द पॉइंट सिस्टम 30-40 पॉइंट्स वैसे भी निकल के आ जा रहे हैं. So those will be some picks. Harshal Patel, if he's bowling first, will be another pick. And फिर यहाँ पे आप जा सकते हैं either with somebody like a Ramandeep Singh or you can go with a Nitish Reddy to close your team. तो ये है दो GL scenarios. In case of collapses, you can go with these scenarios. Of course, these are only for GL. आप इसको small league में बिल्कुल भी नहीं उतार सकते हो. So those were some important points that I wanted to cover. अब चलते हैं मैचअप्स की तरफ. Henrik Klaasen versus Harshit Rana. दो बार आउट हुए हैं Klaasen versus Rana. दो बार strike rate just 153 odd. So for Klaasen standards, that is low. Even though as if you look at it from an overall commitment, कुछ इतना खराब भी strike rate नहीं. अभिषेक शर्मा versus Andre Russell. नौ बॉल में नौ बॉल में दो बार आउट हुए हैं यहाँ पे. याद रखिए, if Andre Russell opens the bowling, it won't be a big surprise from one end or the other because of this matchup against Abhishek. Quinton de Kock versus Shami, तीन बार आउट हुए हैं. That is why I was backing Shami in that team where I was dropping de Kock. And strike rate of 150 odd. So decent strike rate, but 3 dismissals in 36 balls. Another player who might come in this game, while मैंने यहाँ पे रहाणे का मैचअप हाईलाइट किया है, तीन बार आउट हुआ एंड स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 91, he's also kept other batters quiet from the KKR top order. So do keep in mind, don't be surprised if Unadkat comes in this game. So those were some key matchups. Low select dark horse picks, Venkatesh Iyer and Mohammad Shami. Those will be my two trump picks. And I select dropless bomb against Sunil Narayan because pitch से कुछ खास मिल नहीं रहा. Bowlers generally tend to figure him out with the bat in the first few games. And वही हमने last game में देखा with that steering Yorker from Trent Bolt. तो यही रहा हमारा आज का preview. I hope you all enjoyed it. एकदम short and sweet. ना हम time waste करेंगे आपका. Do remember to hit the like button and do hit the bell icon to stay tuned for further such previews. See you all very soon for another one. And thank you so much for tuning in and all your love and support.